আগ্ৰাসী চীন ড্ৰেগনৰ দেশ চীন আকৌ আগ্ৰাসী হৈ উঠিছে। চীনে নিজৰ পুৰণি প্ৰবৃত্তি এৰিব পৰা নাই। ভাৰতৰ পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ অৰুণাচলত আগ্ৰাসী হৈ উঠিছে চীন। ৰাজ্যখনৰ আপাৰ সোৱণশিৰিৰ ৫টাকৈ অঞ্চল দখল কৰি স্থায়ী ঘাটি পাতি বহিছে চীনা সৈন্যই। শেহতীয়াকৈ না ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিৰ সভাপতি কেৰু স্থানে আপাৰ সোৱণশিৰিৰ জিলা উপায়ুক্তক দাখিল কৰা এক স্মাৰক পত্ৰ শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আনিছে এক উদ্বেগজনক সত্য। অভিযোগ অনুসৰি চীনৰ পিপলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মীয়ে আপাৰ সোৱণশিৰিৰ দুৰ্গম টাকচিং খণ্ডৰ কেইবাটাও স্থানত পথ, দলং, সামৰিক শিবিৰ স্থাপন কৰি ঘাটি পাতি বহিছে। দীৰ্ঘ প্ৰায় 10ৰ পৰা 15 বছৰ ধৰি অব্যাহত থকা চীনৰ এই আগ্ৰাসী স্থিতি 2020 চনৰ পৰাই অধিক ব্যাপক আৰু অধিক আগ্ৰাসী হৈ উঠিছে। PLAৰ এই আগ্ৰাসী স্থিতিয়ে এতিয়া শংকিত কৰি তুলিছে সেই অঞ্চলত যুগ যুগান্তৰৰ পৰা বাস কৰি অহা অৰুণাচলী লোকসকলক। PLA আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলা 5টাকৈ অঞ্চল ক্ৰমে অইং, পানিয়াৰ, মাৰপান, পট্ৰাং হ্ৰদ আৰু টিংডিংটাং। কেৰু চাদৰে স্মাৰক পত্ৰত উদ্বিগ্নতাৰে লিখিছে, আমি দিনক দিনে ইঞ্চি ইঞ্চিকৈ আমাৰ ভূমি হেৰুৱাইছোঁ। না ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিৰ এই স্মাৰক পত্ৰ ৰাজহুৱা হোৱাৰ লগে লগে দেশৰ সংবাদ মাধ্যমত সৰব চৰ্চা হৈছে বিষয়টোক লৈ। লক্ষণীয়ভাৱে এনে এটা গুৰুতৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী অথবা বিদেশ মন্ত্ৰী কোনো এজনেও কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা নাই এই পৰ্যন্ত। একেদৰে অৰুণাচল চৰকাৰ বা মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱেও কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা নাই। উল্লেখ্য যে অৰুণাচলৰ ভূমিত চীনাৰ আগ্ৰাসন কোনো নতুন কথা নহয়। 2019 চনৰ 19 নৱেম্বৰতো অৰুণাচলত চলা চীনা আগ্ৰাসনৰ কথাটো সংসদত উত্থাপন কৰিছিল সাংসদ তাপিৰ গাঁৱে। 14 November 2019 ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ जी तवांग गए और बीआरओ का एक पुल को इनागुरेट करने हमारा क्षेत्र आए तो चाइना ऑफिशियल प्रेस मीडिया में स्टेटमेंट नहीं दिया, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ऑब्जेक्शन रेज किया है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गए अरुणाचल, ऑब्जेक्शन रेज हुआ। मोदी जी गए कैंपेन में, ऑब्जेक्शन रेज हुआ। ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी गए, ऑब्जेक्शन वहां प्रेस स्टेटमेंट करके रेज होता है। तो हमारा सरकार और हमारा इस सदन से कोई एक आवाज नहीं है, चाइना का ऑब्जेक्शन को कोई इशू रेज किया नहीं है। দেশৰ সংবাদ মাধ্যম, চৰকাৰ, ৰাজনৈতিক দল কোনো পক্ষই বিষয়টোক লৈ সিমানখিনি উদ্বিগ্ন নহয় যিমানখিনি পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰত হয় বুলি আক্ষেপেৰে উল্লেখ কৰিছিল অৰুণাচলৰ সাংসদগৰাকীয়ে। मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना तरी कब्जा हुआ सदन में, मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार इस चीज को
ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। थैंक यू सर। উল্লেখ্য যে না ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিৰ অভিযোগৰ পাছত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন দল সংগঠন সৰব হৈছে বিষয়টোক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী কৰিছে তেওঁলোকে। जब से ये समाचार आया, हमारे अपर सुबनसिरी के लोग बहुत सदमे में हैं। हमारे वहाँ के लोग अभी रात को चैन का नींद नहीं सो पा रहे हैं। हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, तो इस जो मुद्दा को गंभीरता से ले और जितना जल्दी हो सके वो भारत सरकार के साथ बात करे, और जितना हो सके वहाँ भारत सरकार के बात करने का बाद टीम लेके उस ग्राउंड रियलिटी को चेक करो और कितना ये बात सही है और कितना गलत है। নকলেও চলে। চীনে আদিৰে পৰা নিজৰ দখল সাব্যস্ত কৰিব খোজে অৰুণাচলৰ ওপৰত। পঞ্চশীল নীতিৰ পাছতো চীনে 1962 চনত ভাৰতৰ ওপৰত একপক্ষীয় আক্ৰমণ চলোৱাৰ কথা এতিয়াও সজীৱ হৈ আছে প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ মনত। ডোকলামৰ দৰে ঘটনা বৰ পুৰণি হৈ যোৱা নাই। প্ৰশ্ন উঠিছে 1962 চনৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটাবলৈ কুচকাৱাজ চলোৱাৰ অংশ নেকি চীনৰ শেহতীয়া এই আগ্ৰাসন। Political Desk, People's Northeast.